जय हिंद फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है 2023 का फ्रेंड्स GS1 जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान 1 है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स 2023 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। ये हमारे पास अच्छा है सेट ए। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसमें 200 मार्क का एग्जाम होता है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए कि आपको बीच से कुछ अगर आप देखेंगे 2023 का, तो उस हिसाब से आपको 2024 के लिए प्रिपेयर होगी। किसी भी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। आपको फिर प्रीवियस क्वेश्चन थ्रू में आपको पता चलेगा कि किस ट्रेंड का क्वेश्चन अभी आ रहा है, क्वेश्चन का कैसा क्वालिटी सेंट्रिक रहता है या स्टैटिक सेंट्रिक रहता है। तो आपको फ्रेंड्स चलिए हम हमारा मोटिव ये है फ्रेंड्स, एक वीडियो में हम एनालाइज करेंगे जो अपना क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन आर क्वेश्चन इज नॉट क्वालिटी मैच। तो इसमें से कौन सा क्वालिटी मैच नहीं है, ये पूछना है आपको। देखिए यूनिट टेरिटरी दिया है, क्या पार्ट 8 में है, शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया क्या पार्ट 10 में है, या ट्रिब्यूनल ये पार्ट 11 में है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है। तो फ्रेंड्स आपको मैं 3 सेकंड टाइम दूंगा फ्रेंड्स, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए नॉट क्वालिटी मैच फ्रेंड्स इसमें है ट्रिब्यूनल, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। जैसे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिब्यूनल था फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये ओरिजिनली मेंशन नहीं था। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था फ्रेंड्स, इसको हम ऐड किए थे फ्रेंड्स पार्ट 14 ए में। ये पार्ट 14 ए में है फ्रेंड्स। आप उसको ये रॉन्ग कर सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जैसा कि फ्रेंड देखिए लिस्ट 1 में फ्रेंड्स आपको आर्टिकल दिया है एंड लिस्ट 2 में उसका बॉडी का नाम दिया है। ये आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 315 किससे है, आर्टिकल 280 किससे है, एंड आर्टिकल 338। तो हम इसको इजीली फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। देखिए 324 जो है ये इनिशियल कमीशन इंडिया से रिलेटेड था, तो 1 का जो है फ्रेंड्स ए का 4, तो आप इसको देखिए लिमिट कर दीजिए, आपको राइट आंसर आ गया था। जैसा बी देखिए 315 पुलिस सर्विस कमीशन से बात करता है फ्रेंड्स। ये 280 फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन, फ्रेंड्स 338 फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जैसा फ्रेंड्स 338 ए शेड्यूल ट्रैक के लिए आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, consider the following events and arrange this in the correct chronological order, starting from the earliest to last activity. ऑप्शन ए देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ऑप्शन सेकंड क्या हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग। तो आपको क्या अरेंज करना है फ्रेंड्स, आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला क्या होता है फ्रेंड्स, उसको आपको इस हिसाब से आपको एनालाइज करना है फ्रेंड्स। देखिए बार पहली बार तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो मीट करेगा, और फिर फ्रेंड्स 4 आएगा। ये 4 कहाँ का है, ये आप दोनों इसको मीट कर दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एप्रूवल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी उस पर रिपोर्ट होगा, जो में ये है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट इनैक्ट किया जाएगा जब डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये लास्ट रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 1 2 3। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एंड असेसमेंट दिया है, तो रीजन है। असेसमेंट क्या बोला, देखिए द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर द सीकिंग व्यूज ऑफ ए कंसर्न लेजिस्लेचर of that state on the subject within the specific period. रीजन क्या बोला देखिए, it is not mandatory for president to accept the proposal of the concerned state legislature. Select the correct answer using the code given below. ऑप्शन दे लीजिए, both 1 and A and R are true and R is correct explanation of A. B क्या बोला देखिए, both A and R are true but R is not a correct explanation of A. A is true, R is false, and R is false and R is true. तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो है रीजन का
और एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। With reference to the election of a Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements is correct? The act done by him as a Vice President, such a declaration are considered valid. The act done by him as a Vice President on the day of such declaration are not considered valid. तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन में फ्रेंड्स रीड है, एक रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, एक राइट होगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, one only, two only, both, one and two, neither one or two. तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वन ओनली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे फ्रेंड्स, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इंडिया का फ्रेंड्स फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो पहली बार महिला थी, उनका नाम दिया आपको, क्वेश्चन दिया गया है। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए। प्रतिभा पाटिल जी है, उर्मिला सिंह जी है, मीरा मीरा कुमारी जी है, सुषमा स्वराज जी है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, which one of the following pairs scheduled subject जो है not quality match, इसमें कौन सा quality match चाहिए आपको बताना फ्रेंड्स। थर्ड शेड्यूल जो है फॉर्म होते हैं एफएमएसएस रिलेटेड, एट शेड्यूल क्या लैंग्वेज रिलेटेड है, नाइन्थ शेड्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, टेंथ शेड्यूल देखिए प्रोविजन फर्स्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो सर राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये नॉट करेक्ट है। तो नाइन्थ शेड्यूल है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपको जिसकी सेंट्रल लिस्ट है या स्टेट लॉ है, जो भी आप इसमें डाल देंगे तो आप इसे कोर्ट में चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये रॉन्ग आंसर है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स एलोकेशन ऑफ द सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, ये फोर्थ शेड्यूल है फ्रेंड्स, फोर्थ शेड्यूल में। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। Constitution of India initially permitted the use of English language for all official purposes for a period of या 5 साल के लिए था, या 10 साल के लिए था, 15 years या 20 years। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 15 years के लिए था। ये गिवन बिलो ए टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज एक्सेशन इन अदर रीजन है। एक्सेशन क्या बोल रहा है देखिए, द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, देन रीजन क्या है देखिए, ए बिल पास्ड बाय टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सुन लीजिए फ्रेंड्स, both A and R are true, R is not correct expression of A. Both A and R is true, R is correct expression of A. A is true, R is false, and A is false, but R is true. तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बोथ ट्रू है, बोथ ओरिजिनल रीजन दोनों सही है, और ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। With respect to the Indian Finance Commission, which of the statements are true? Finance Commission has the chairman and 6 other member। देखिए इट इज सबमिटेड, ये सबमिट करता है रिपोर्ट टू द नीति आयोग। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फ्रेंड्स टू ओनली, बोथ वन टू, ओनली वन, neither one or two। फाइनेंस कमीशन फ्रेंड्स इसका चेयरमैन रहते हैं एंड नॉट 6 थे, 4 अदर मेंबर रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अपना रिपोर्ट है फ्रेंड्स सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, नॉट नीति आयोग। तो ये ग्राउंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, neither one or two। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, consider the following statements concerning the power of Supreme Court to issue the certain writs stop violation of fundamental rights। ये देखिए, the Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, which is the appropriate for the enforcement of the fundamental rights। Parliament may, by law, empowers any other court to exercise within its jurisdiction the power given to Supreme Court। Which of the above mentioned statements is correct? देखिए ऑप्शन देखिए, both one and two, one only two, neither one or two। तो सेकंड से पहले ऑप्शन नंबर ए बोथ वन टू इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देखिए, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए पर्सन इज अपॉइंटेड as attorney general who is qualified to be appointed a judge of a Supreme Court। Attorney general is can be removed through the same process as judge of the Supreme Court। Select the correct answer
From the code given below, only one, only two, both one and two, another one or two. हम व्हाट will do friends हम ये रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रेशर प्रेशर के थ्रू में रहते हैं नोट है अच्छा अच्छा तो राइट इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स तो the question number 13 friends with reference to the composition of a legislative council in a state of India which of the following statement is correct in legislative council there may not be more than one third member of total membership of legislative assembly of that state. The legislative council of a state must have at least 40 members in it. Select the correct answer from the code given below. One only, two only, both one and two, another one or two. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स वन एंड टू जैसे कि वन थर्ड मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का काउंसिल में और एटलीस्ट 40 मेंबर होने चाहिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे with reference to the representation of Uttar Pradesh in parliament which of the following statement is correct Uttar Pradesh has 31 seats allocated for Rajya Sabha 80 members of Lok Sabha are elected from Uttar Pradesh here the correct answer is the code given below only one only two both one and two another one ये दोनों राइट है फ्रेंड्स जैसे राज्यसभा में 31 मेंबर रहते हैं एंड लोकसभा में 80 मेंबर रहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर with reference to the post in a secretariat of the parliament which of the following statement is correct common post may be created for the secretariat of each house of parliament the parliament has the right to regulate the service condition of secretariat staff of either house of it select the correct answer from the code given below optional events only one only two both one and two another one or two इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैसे कॉमन पोस्ट ऑफ कैबिनेट क्रिएट कर सकते हैं सेक्रेटरी लेवल दोनों हाउस के लिए तो पार्लियामेंट के पास राइट है से रेगुलेट कर सकता है सर्विस कमीशन सेक्रेटरी दोनों हाउस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे which of the following statement is not true regarding the gram sabha it has power and function at the village level like the state legislative state legislature has at least at the state level its power is determined by the central government it is a village assembly consists of all the registered voters in the area panchayat and D में 1 and C तो इसका राइट आंसर ये नॉट करेक्ट पूछा आपको नॉट ट्रू होना है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसा कि ये डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है तो क्वेश्चन 17 पे और इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय पंचायत का इलेक्शन कौन करता है फ्रेंड्स स्टेट लेजिस्लेचर करता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है या पंचायती राज कमीशन का इलेक्शन तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे to the reference to the recommendation of the Ashok Mehta Committee 1977 on the Panchayati Raj, which of the following statement is correct? The three-tier system of Panchayati Raj should be replaced by the two-tier system. A block should be a first point for decentralization under the popular supervision below the state level. Select the correct answer using the code given below. One only, only two, both one and two, and neither one not two. So right is option number A, only one है. The resignation letter by judge of Supreme Court इसको एड्रेस करते हैं टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो स्टार्ट से फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट आपको देते हैं ऑप्शन सी स्टार्टिंग सर तो क्वेश्चन 20 पे which of the following is not a part of the article 20 of constitution of India a prohibition against the self incrimination या डबल jeopardy clauses है या prohibition against the torture है या ex post facto law है तो स्टार्ट से ऑप्शन नंबर सी prohibition against torture इसका मींस इसमें मेंशन नहीं है चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे which of the following provision is a part of both directive principle of a state policy and fundamental duty guardian to the provide
opportunity for education to children, protection of environment, participation of worker in management of industry and uniform civil code. उसमें से पूछ रहे हैं आपको कि इसमें से कौन से दोनों जो है हो गया फंडामेंटल राइट का पार्ट है एंड फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है. तो राइट से फ्रेंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर 20 रहेगा. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे थे? विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस. द स्पीकर प्रिसाइड ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. हियर द करेक्ट आंसर इज कोड गिवन बिलो 1 2 both 1 and 2 neither 1 or 2. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली है. कैप्टन जॉइंट सिटिंग होता है आर्टिकल नंबर 109 में रहता है. आर्टिकल नंबर 108 रहता है फ्रेंड्स, नॉट इन 108. जो आर्टिकल 109 है फ्रेंड्स स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू मनी मिनिस्ट्री. उसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 23 क्या बोला देखिए. विद रेफरेंस टू invaders in ancient India, which of the following is are correct chronological order दे रहा है आपको. ऑप्शन देखिए इधर ग्रीक साकास कुशांस, ग्रीक कुशांस साका, या फिर साका थे ग्रीक आए थे कुशांस, या साका कुशान या ग्रीक. दूसरा राइट chronological order रेफरेंस पहले ग्रीक आए थे, दूसरा साकास एंड दूसरा कुशान. वैसे है. जैसे क्वेश्चन 24 पे मिलान कानून is the form of a dialogue between the king, Milin, and Buddhist saint. The concerned संत वास उसमें से कौन सा संत है नाम पर पता है? नागार्जुन थे वो, नागाभट्टी, नागार्जुन थे या कुमारिल भट्ट. तो राइट से फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स. चारक संहिता is divided into how many chapters and section? तो चारक संहिता था फ्रेंड्स ये कितना चैप्टर में था और फ्रेंड्स कितना सेक्शन में डिवाइड होता है. दूसरा फ्रेंड्स 120 चैप्टर था फ्रेंड्स एंड 8 सेक्शन. क्वेश्चन में डिवाइड. चलते क्वेश्चन 26 पे. Which of officers was known as Bhagavad Duga during the Vedic administration? Messengers, chief officer of the forest, chief officer of the gambling department, या रेवेन्यू कलेक्टर. तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी रेवेन्यू कलेक्टर था. तो क्वेश्चन नंबर 27 पे. Match list 1 with list 2 and choose the correct answer using the code given below. लिस्ट 1 देखिए, लिस्ट 2 देखिए, आपने इनका सेट दिया है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में देखिए प्रेजेंट लोकेशन है नेवासा, इसामपुर, दिदवाना, इन गोडियम के. आप लोकेशन देख सकते हैं. राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है. अपना भी दिया है. जैसे मैंने देखिए ढेर सारा ही जो है ये आपको मिलेगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में. वन का थर्ड है फ्रेंड्स. यहाँ पे रीड कर ईशानपुर देखिए ये आपको मिलेगा कर्नाटका में. डी का फोर्थ तो आप डी को रीड कर दीजिए. दिदवाना देखिए आपको राजस्थान में मिलेगा. तो पॉइंट से है ऑप्शन नंबर ए. गोडियम केप जो है आपको मिलेगा यहाँ पे तमिलनाडु. तो फ्रेंड्स ये जिससे आपको अगर प्रेजेंट लोकेशन पता होगा फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा. तो उसको आप एलिमेंट से ट्रिक लेके अगर फ्रेंड्स आपको अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपके लिए इजी होगा. तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आप दूसरी ट्रिक यूज करेंगे. ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ए हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हड़प्पा था, हाथीगढ़ी था, आलमगीरपुर था या मंडा था. तो राइट आंसर ऑप्शन बी आलमगीरपुर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे. With reference to the Puranas, which one of the following statement is correct?
Information about the Mauryan dynasty is found in the Vishnu Purana. विष्णु पुराना जो थ्रोन था थ्रो लाइट ऑफ द गुप्तास गवर्नमेंट सिस्टम ऑप्शन देख लीजिए ओनली वन ओनली टू बोथ ओनली टू नेदर वन और टू तो इसका डिस्प्ले ऑप्शन नंबर सी बोथ वन टू करेक्ट है इसका तो द क्वेश्चन 30 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कुड हैव थॉट इन प्रोपोनेंट इक्वालिटी मैच हो रहा है बेसिक का देखिए पतंजलि से रिलेटेड है मीमांसा क्या गंगा से रिलेटेड है माया क्या गौतमा से रिलेटेड है उत्तरा हिमसारा ये क्या कपिला से रिलेटेड है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इक्वालिटी मैच हो रहा है जो नया है गौतमा से रिलेटेड तो देखिए क्वेश्चन 31 पे with reference to Captain Hawkins which of the following statement is correct तो आपको पूछना फ्रेंड देखिए he came to India in 1611 1611 में as an employee of James Bond he was the very well versed in Turkish language उसमें दीजिए only one only two four one two neither one two तो सही आंसर है ऑप्शन डी neither one or two है ना कि फिर से 1911 में 1908 गए थे सॉरी 1608 में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन 32 पे who was खिरदार या ये डिपर्चर्स ऑफ रॉयल डिक्री थे या मेन क्वेश्चन ऑफ ए रॉयल प्लेस थे चीफ ऑफिसर ऑफ ए परगना थे या एन ऑफिसर हु वाज ट्रेन्ड इन ए कीपिंग अकाउंट तो सही से बेस्ट ऑप्शन नंबर ए डिपर्चर थे ऑफ ए रॉयल डिक्रीज चलते क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ये लिस्ट देखिए बुक देखिए और कॉन्टेक्ट देखिए मिरात ए सिकंदरी बुरहान ए नसीर रियाज और सलातीन रियाज और इंसाफ ये विजय बंगाल जनता की कॉन्टेक्स्ट में इश्यू ऑफ ग्रामिकल अहमदनगर प्लस ऑफ मोहम्मद गवान्स लीडर्स इन विक्ट्री ऑफ गुजरात तो देखिए फ्रेंड्स जो ये मिरात ए सिकंदरी था ये विक्ट्री ऑफ गुजरात है ऑप्शन नंबर ए को हम डी भी लगा देते हैं 1/4 तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों को बुरहान ए नसीर था ये हिस्ट्री ऑफ जर्मनी मिस अहमदनगर था तो बी का 2 है उसके बाद देखिए रजत उस सल्तानी ये हिस्ट्री ऑफ बंगाल का रिलेटेड है 3 का 1 देखिए रियाज उम इंसा तो आपको ये मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे और ऐसा वो मोहम्मद गवान लेटर तो इसका राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इमेज इट इज फादर ऑफ रजिया तहा तुर्कान वाइफ ऑफ इटरमीज हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देखिए गुलबदम बेगम डॉटर ऑफ बाबर दूसरे देखिए फ्रेंड्स वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आप यहाँ पे रॉन्ग फ्रेंड्स से मलिका इज जहां जी थे वो बॉय ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्टली मेंशन तो चलते क्वेश्चन 35 पे कंसीडर द रीजन ऑफ ए फॉलोइंग फेस्टिवल इन अरेंज करना है उनको ओरिजिनल ऑर्डर में देखिए बालाजी विश्वनाथ बाजीराव नारायण राव माधव राव पहले देखिए फ्रेंड्स बालाजी विश्वनाथ थे पहले उसके बाद देखिए बाजीराव फर्स्ट उसके बाद आपको पता होगा माधव राव उसके बाद नारायण राव उसका ऑप्शन नंबर डी तो क्वेश्चन नंबर 36 पे which among the following ruler of Kashmir एवरेस्ट कहती है जजिया एंड काउस नेटर को आप उनका नाम बताने पड़ेगा आपको क्या फिर से उस शमसुद्दीन शाह थे सिकंदर शाह थे जैन उल आबिदीन थे या हैदर शाह थे तो राइट आंसर ऑप्शन सी जैन उल आबिदीन जी थे
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख रहे हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट करा है 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स allotted by Firoz Tughlaq during the campaign of नागरकोट। तो अलाउद्दीन खिलजी थे या ललित उमली थे, मौलाना अब्दुल बाकी थे या मिर्जा मोहम्मद अली थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अजीजुद्दीन खान थे। चलते क्वेश्चन 38 पे। Tappa style of music was refined and developed in which of the following Mughal empire? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह के टाइम पे। तो क्वेश्चन 39 पे which of the following जो पॉइंट्स है एंड कंपोजिशन है नॉट कॉल्ड इमेज, इमेज नहीं है बोला आपको। दादा भाई भिनेच मलिका, साहा जोबाई, ताज प्रकाश, उसके बाद फ्रेंड्स गंगा बाई गणेश देवलाल, सोन कुमारी पॉइंट ऑफ सोन वैली। तो आपको यहाँ बोला फ्रेंड्स कौन सा क्वालिटी यहाँ पे मैच नहीं है फ्रेंड्स। गंगा बाई है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। जिन्हें क्वेश्चन 40 पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ रिवोल्ट जो 1857 का था स्टार्ट हुआ था रेगुलर इन नॉट कॉल्ड मैच। लद्दाख में 29 मार्च 1857 का स्टार्ट हुआ। मेरठ में क्या 10 मई 1857, लखनऊ में 4 जून 1857 या झांसी में 18 मई 1857। झांसी में जो फ्रेंड्स ये 11 में नहीं था, पहले 10 में था, 10 में 1857 थे। उसके राइट से ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन 41 पे। In 1918, the United Person Kisan Sabha was formed by which of the following leaders? Baba Ramachandra, Indra Narayan Dwivedi, Swami Dayanand Saraswati, अपने चारों ने। तो राइट सेकंड्स ऑप्शन बी इंदिरा नारायण द्विवेदी जी थे। क्वेश्चन 42 पे फ्रेंड्स which among the following organization was responsible for the throwing a bomb at a Viceroy Lord Harding in Delhi? All India Labour Association थे, लीडर पेट्रियोटिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति या युगांतर। राइट रेफरेंस अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 थे by which of the following acts the system of a chamber of witnesses with 120 members was created? Charter Act 1853, Charter Act 1793, Act of 1909 या Act of 1990। तो चार्टर बस 1919 में हुआ था, उसमें डी जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। With reference to E.V. Ramaswamy Nayagar, which of the following statements is correct? He participated in the non-cooperation movement. He left the Congress in 1925. Due to the current time, using code only both one to another one होता है। तो चार्ट से ऑप्शन सी both one to दोनों राइट है। चलते क्वेश्चन 45 पे। What is the name of the female regime जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? या रानी भवानी उनका नाम था रेजिमेंट, या रानी झांसी उनका नाम था, भारत माता था, या वीर गंगा रेजिमेंट था? रानी झांसी उनका नाम था, उसमें 20 राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे फ्रेंड्स। Who was the leader of rebellion जो बरेली में हुआ था उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट में? आजाद महल जी थे, खान बहादुर खान जी थे, कुंवर सिंह जी थे या नाना साहेब जी थे? तो चार से ऑप्शन बी खान बहादुर खान जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 फ्रेंड्स। Which of the following events was the last in the chronological order? Rome, Rome movement, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मार्च एंड विप्लव रिवॉल्ट। सबसे लास्ट में कौन सा हुआ? अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है फिर आपको। तो सबसे लास्ट में इवेंट मौका भी रहेगा, लेकिन पहला फिर मतलब ये बाद में होगा। तो क्वेश्चन 48 पे। Who among the following women freedom
fighter was not associated with the Quit India movement. Matangini Hajra, Runa Asif Ali, Kanak Lete Borwa, the Santi Ghose. Which adds the option D, Santi Ghose. But the question 49 which one of the following is it tributary river है? Not holding match. देखिए मंजरा क्या गोदावरी से रिलेटेड है, हेमावती क्या कावेरी से रिलेटेड है, मलाप्रभा के कृष्णा से रिलेटेड है, प्रणिता या महानदी से रिलेटेड। तो स्टार्ट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी, ये नॉट होल्डिंग मैच गोदावरी से रिलेटेड फ्रेंड्स, जो प्रणिता है आपको ये गोदावरी से रिलेटेड है। तो the question 50 में which one of the following place is the confluence of the river Alaknanda and the Bhagirathi? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है देवप्रयाग। आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग है। क्वेश्चन 51 के बोले थे which of the following statements is correct about the right side? This soil is developed in area with a high temperature and heavy rainfall. It is poor in iron oxide and aluminium. Here are the correct answer using the code given below. So the friends, only one, only two, both one and two, another one or two. तो स्टार्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये डेवलप होता है जो एरिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे, ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर, कौन सा लेयर है? क्या वो ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो स्टार्ट से पहले ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 पे, बीइंग द प्लेस चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस इन ओरिजिन, जो रिवर है देखिए प्लेस ऑफ ओरिजिन यमुना, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। प्लेस ऑफ ओरिजिन के लिए सिकोर, नासिक, भुवनेश्वर एंड यमुनोत्री। जैसे कि देखिए महानदी डी को आ जाएगी पहली बार, डी है भुवनेश्वर, आपका छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होता है तो डी का 3 है, आप उसको एडिट कर दीजिए, फिर आ गया उसमें से आंसर। जैसे देखिए यमुना जो है यमुनोत्री गिरिजा से निकलता है, कृष्णा देखिए नासिक से निकलता है फ्रेंड्स, गोदावरी देखिए सिहावा से निकलता है, तो साइड से बोल देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, गिवन बिलो और टू रीजन दिया गया है, जैसे एसएसओ ने रीजन है तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन में रहता है। तमिलनाडु कोस्ट is situated the parallel to the Bay of Bengal branch of the south west monsoon and it lie in the red shadow area of the Arabian Sea branch in southwest monsoon during the monsoon season. Select the correct answer using the code given below. ऑप्शन देख लीजिए, 1:2 R is plus, east plus R is 2, both A and R is 2, but I is not correct expression of A. Both A and R are true, R is correct expression of A. तो स्टार्ट is up to numbers D. A और R दोनों फ्रेंड्स ट्रू है, R इज करेक्ट एक्सप्रेशन of A. तो द क्वेश्चन नंबर 55 पे, which of the following statement is correct? रामगंगा रिवर्स जॉइन करता है गंगा एट कनौज, रिवर बेतवा जॉइन करता है यमुना ये प्रयागराज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन लिए ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन टू, नेवर वन टू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो रिवर गंगा जॉइन करता है गंगा को एट रामगंगा कनौज में। रिवर बेतवा जॉइन करता है यमुना को बना नया प्रयागराज, यमुना और गंगा मिलते हैं प्रयागराज। जल्दी क्वेश्चन 56 पे, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का फ्रेंड्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है, आपको पूछा है। ऑप्शन दे दीजिए फ्रेंड्स, सोनभद्र, चंदौली, बहराइच एंड लक्ष्मीपुर खीरी। जिससे कि राइट आंसर फ्रेंड्स चंदौली में है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 57 पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जो पासेस है स्टेट यूनियन टेरिटरी करंटली मैच है, क्या अभी अरुणाचल प्रदेश में है, दीपू
क्या लद्दाख में, नीति क्या उत्तराखंड में, एंड मानस हिमाचल प्रदेश में, सॉरी माना। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नीति उत्तराखंड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में फ्रेंड्स। शिवसुंदरम एंड कल्पाकम आर रेस्पेक्टिवली important for hydropower and nuclear energy, thermal power and nuclear energy and hydropower, solar power and nuclear energy. तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे, consider the following statement with reference to Uttar Pradesh. The forest constitutes about 12.8% of the total geographical area of the state. District of Jaunpur, Gazipur and Bhilai have no forest land. Select the correct answer from the code given below. Only one, both one and two, only two, neither one or two. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, बोथ वन एंड टू करेक्ट आंसर। then question 60 पे, which of the following sports country is not a quality match, इसमें कौन सा quality match दिया पूछ रहा है। क्या रोटरडम क्या नीदरलैंड से रिलेटेड है, टिगर का क्या चाइना से रिलेटेड है, मोंटेवीडियो यूरागी से रिलेटेड है, या जकार्ता इंडोनेशिया से रिलेटेड है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा क्वालिटी मैच नहीं है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, टिगर का जो है चाइना से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, आपको ये वैसे मिलेगा फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है, राइट आंसर बी है। then question 61 पे, which of the following statement is true? Regular current is the cold current of a specific question. If the sun of earth move होता है and moon are straight line है, then this situation of small tide निकलता है उस टाइम में। Ocean salinity is maximum होता है tropics of Cancer Capricorn में। और ऑप्शन नंबर डी क्या होना है, टाइड्स कम करता है और एवरी 12 and 30 minutes, 12 hour 30 minutes। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जैसे salinity जो ज्यादा होता है ओशन का ट्रॉपिक कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो क्वेश्चन 62 पे, the river situated along the border between United States of America and Mexico, तो कौन सा वहाँ पे रिवर सिचुएटेड है, क्या द मिसिसिपी है, द रियो ग्रांड है, द अमेजन है, या द कोलोराडो है। तो इसका राइट आंसर द रियो ग्रांडे। क्वेश्चन 63 पे, consider the following desert, arrange them in increasing order of their size from small to largest. Great Sandy Desert, Arabian Desert, Sahara Desert and Gobi Desert। अब बताना है फ्रेंड्स उसका साइज है, स्मॉलेस्ट है लेकिन लार्जेस्ट है। जैसे सबसे बड़ा आपको बताओ फ्रेंड्स सहारा डेजर्ट है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए बी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अरेबियन डेजर्ट आएगा, तो आप देखिए उसका ऑप्शन 2 में देखिए आपको एलिमिनेशन आएगा। उसके बाद जैसे कि आपको गोबी डेजर्ट आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे सेंट्रल डेजर्ट, उसमें सी रहेगा। आपको फ्रेंड्स एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है, एलिमिनेशन टेक्निक आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 64 पे, to whom does the credit goes for the development of a coconut and sugarcane agriculture in Philippines? The फ्रांस है, ब्रिटिश है, पोलैंड है, या स्पेनिश है, अमेरिकन है। दैट इज ऑप्शन डी है, स्पेनिश है, अमेरिकन। तो देखो क्वेश्चन 65 पे, इस वन दिया है, मैच करना आपको लिस्ट के साथ, सिलेक्ट करना करेक्ट आंसर कोड गिवन मुझे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, कंट्री का नाम दिया गया है, जैसे कि किलिमंजारो, तुफ्ताउ, स्टर्लिंग, इथोपिया। जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया एंड यूरोपियन। जैसे किलिमंजारो देखिए आपको तंजानिया मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स तुफ्ताउ, तुफ्ताउ आपको मिलेगा फ्रेंड्स मोरक्को में, बी का 2, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रेंड्स।
स्टेनोले है जो आपको एक घंटा मिलेगा, होवर जो आपको मिलेगा यहाँ पे नाइजीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कंट्री है नॉट पॉलिटी बेस्ड, तो देखा कि रशिया से रिलेटेड है, मिशिगन के रिलेटेड अमेरिका, ओनेगा के कनाडा से रिलेटेड है, हमारा की कैगो ब्रिलिया से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ओनेगा जो है ये कनाडा से रिलेटेड नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। आपको फ्रेंड्स जो ओनेगा है आपको रशिया में मिलेगा। तो द क्वेश्चन नंबर 67 फ्रेंड्स, with reference to the all Nino, which of the following statement is correct? El Nino इन्होंने पता है appearance of a warm current of the coast of Peru in Eastern Pacific. सेकंड क्या बोला है, this warm current increase करता है the temperature of the water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. Select the correct answer using the code given below. Put the selectors only one, only two, both one and two, neither one or two. Okay, that's the friends. Number A, only one is selected. Next the accuracy for all correct. You call the Peruvian nation. So the question was 68, friends. What caused wind to deflect towards the left in the southern hemisphere? The temperature, totally force, magnetic field, या pressure. So that's the friends. Question will be correlate force. Question 16 क्या बताएगा? Which of the following is the largest coal producing centers of Ukraine? Zaporizhzhia, Kharkiv, Kiev, या Donetsk. So that is the friends. Option C, Donetsk. So the question 70 Mount Newman is the famous for which of the following minerals? कौन से mineral के लिए famous है? Iron ore, copper, manganese या आपको bauxite. So that is the friends. Option A, iron के लिए famous है. The next question पे question 71. How many railway stations have been identified for modernization under the Atma to the Amrit Bharat Station scheme in Uttar Pradesh February 2023 के हिसाब से 87, 82, 123 and 149. So that is the friends. 149 option number D slide था. चलते question 72 पे. Where was the Sudarshan Prahar Army exercise करते हैं carried out in December 2022? क्या गुजरात था और राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था या मध्य प्रदेश? तो सोलर सेकंड अपनी मूवी राजस्थान। क्वेश्चन 73 पे as per the social progress index रिलीज हुआ था इन दिसंबर 2022 में, which of the following is are top 3 position in the very high social progress in tier 1? पुडुचेरी, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सॉरी पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा है इसमें। बी में देखिए मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। सी में देखिए केरला, नागालैंड एंड मेघालय। डी में देखिए फ्रेंड्स नॉन ऑफ द एबव। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप एंड गोवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे फ्रेंड्स। The NASA satellite is the jointly developed by which of the following organization? The leaders: ISRO, NASA, ESA, NASA, and Roscosmos and CNSA. तो स्टार्ट देखा ऑप्शन नंबर ए, ISRO, NASA उसको डेवलप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। According to the Indian budget 2022-23-24, how many Skill India Independence Learning Centers are to be set up across the different states to skill youth for international opportunities? 20, 30, 40 या 50? So that's the option number D, 30 है। तो क्वेश्चन 76 पे, who is the author of the famous novel All the Lives We Need Live, which रिसीव किया था जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का? ऑप्शन देख लीजिए, नीता देसाई, अनुराधा रॉय, शोभा दे, सुधा मुखर्जी। स्टैंडर्ड सेकंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुराधा रॉय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। तो the reference to mineral resource, which of the following statement is correct? Lithium in mineral resource have been found in Desai district of Jammu Kashmir. India import करता है dependent of many minerals like lithium, nickel and cobalt के ऊपर। Select the correct answer using the code given below. One only, two only, both one and two, neither one or two. तो स्टैटस में ऑप्शन सी दोनों इसका राइट है।
तो क्वेश्चन 78 पे इन फरवरी 2023 के हिसाब से इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फर्स्ट इनॉग्रेट किया गया था इन विद द फॉलोइंग प्लेस में हाँ चिकरी उत्तर प्रदेश में या तुमकुरू कर्नाटका में या कोयम्बटूर तमिलनाडु या नासिक महाराष्ट्र तो सही आंसर है ऑप्शन बी तुमकुरू कर्नाटका में तो क्वेश्चन नंबर 79 पे फ्रेंड्स who composed the golden globe award winning song Natu Natu SS Raja Moli MM Keravani देवी श्री प्रसाद एंड डी में देखिए ए आर रहमान जी थे तो सही आंसर है ऑप्शन बी MM केरीवानी जी थे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे फ्रेंड्स द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर्स इज बीइंग सेट अप इन व्हिच स्टेट और कहां पे किया जाएगा कि हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश या गुजरात में तो सही आंसर फ्रेंड्स हरियाणा में किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे फ्रेंड्स with reference to India G20 logo which of the following statement is correct the logo has lotus with seven petals seven जो petals था have a logo of ribbon का था 7 quadrillion को let the correct answer is in the given below one only two only both one and two another one or two तो इसका आंसर है ऑप्शन सी both one and two तो क्वेश्चन नंबर 82 पे which of the following corporate class somebody जो है फर्स्ट कमीशन हुआ था टू इंडियन नेवी तो जनवरी 2023 INS बेला INS Lagi INS Calvary and INS Karanj तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी INS Lagi चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे तो दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास किया था वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैन किया था स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यूजीलैंड गोल्ड टू स्मोक फ्री बाय कहता था उसको स्मोक फ्री होना है तो 20 को तक 25 29 या 2030 में तो पहले से ऑप्शन नंबर बी 25 तक उसको फ्री करना है स्मोक फ्री तो क्वेश्चन नंबर 84 पे प्लेन ऑफ व्हिच रेल लाइन क्रैश इन नेपाल जनवरी 2023 में जो है नेपाल एयरलाइन था वो बुधा एयरलाइन था तारा एयरलाइन था या येती एयरलाइन था तो सही आंसर है ऑप्शन डी येती एयरलाइन है तो क्वेश्चन नंबर 85 पेमेंट्स who among the following has authored the book of Spare Prince Harry Prince Williams Prince Philips या डी में देखिए किंग चार्ल्स तो सही आंसर प्रिंस हैरी जी थे तो हम ए सही आंसर चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे with reference to the people so report Benedict 14 जो Pope Benedict XVI defense who did recently which of the following statements are he was a native of Germany he was the first Pope of region of in 600 years select the correct answer union code given to रहते सुन लीजिए one only two only both one and two another one or two तो स्टार्ट से ऑप्शन सी दोनों सारे करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे with reference to the SCO film festival 2023 which of the following statements right SCO film festival जो था being held during the India's presidency of Shanghai Cooperation Organization SCO film festival will showcase the film from the SCO countries select the correct answer region code given below only one only two both one and two neither one or two so that is sentence option number C both one and two is correct then next question number 88 पे who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand in January 2023 आपको देखिए जैकिंडा आर्डन क्रिस हिपकिंस लिंडी हीरो कार्मेल स्टूडेंट दूसरा रहता है ऑप्शन बी हैरिस हिपकिंस चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे which of the following cities of Uttar Pradesh is not included in the venue of 11 meeting of 200 session of G20 during the India's presidency जो हुआ था यूपी में आगरा वाराणसी कानपुर या ग्रेट नोएडा So that is the best कानपुर इनपुट में था ऑप्शन सी राइट आंसर चलते क्वेश्चन 90 पे गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट दिया गया है तो एक एडिशन है और सेकंड रीजन है जैसे क्या बोला था कि 12 चीता अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन फरवरी 2023
23 में लाया गया तो होता है। देखिए फ्रेंड्स, रिस्टोरिंग द चीता's population is considered to be priority for India. Select the correct answer using the code given below. Both A and R is true and I is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true and R is false. A is false and R is true. So that is the friends. Option A is A and R दोनों सही है. जो R है friends correct explanation है A. So the friends question number 91 पे friends. With the reference to the Lakin University, which of the following statement is correct? It will be first foreign university to enter किया था India's of independent campus. It is being set up in Maharashtra. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both one and two, neither one or two. तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए only one है. ये पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंटर किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. आपको फिर से महाराष्ट्र में नहीं फ्रेंड्स, आपको ये दिल्ली में मिलेगा. तो क्वेश्चन रिलेटेड के व्हिच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन has been elected किए गए as mayor of London what of his out what for second time. Sam Dalton, Sunil Chopra, Gautam Adani, and Neeraj Patil. So right second, Sunil Chopra जी will be said answer. चलते हैं क्वेश्चन 93 पे. On 25th December 2022, which of the following countries is extend करा है military service for 1 year to those males who were born after 1 January 2005. तो म्यांमार था, ताइवान था, श्रीलंका था या अफगानिस्तान था. तो राइट इसका ऑप्शन बी ताइवान था. तो क्वेश्चन 94 पे among the following which country has declared किया है to relieve of British monarch from its central bank currency notes on 2nd February 2023 से. क्वेश्चन देख लीजिए. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या नेपाल. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है. तो क्वेश्चन नंबर 95 पे on which of the following would charge the finance minister Nadim Jawawi was sacked from the government in February 2023 by the British PM Rishi Sunak. Disclosure of secrecy of a B में क्या देखिए tax scandal of cabinet, tax scandal, and none of the above. So that is it. Option number C, tax scandal है. So the question number 96 पे which of the following element is not a novel gas? इसमें कौन सा novel gas नहीं है? Argon, krypton, radon या actinium. So that is friends actinium नहीं है. Option D side ये नहीं है. So the question 97 है friends. Which of the following hormones is secreted by the beta cells of itself of a Langerhans of pancreas? Glucagon, insulin, adrenaline या aldosterone. तो 60 सेकंड्स ऑप्शन बी इंसुलिन है. इंक्रेशन इन कर रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे which type of vaccine protect कर रहा है against the diphtheria से? टॉक्सोइड, लाइव एटेन्यूएटेड, mRNA या वायरल वेक्टर. 60 ऑप्शन बी टॉक्सोइड है. चलिए क्वेश्चन 99 पे which of the following mRNA जो वैक्सीन है यूज किया जाता है अगेंस्ट कोविड-19 इंजेक्शन के लिए? सिनोवाक, मॉडर्ना, स्पुतनिक स्पुतनिक या डीवी कोवैक्स है. तो 60 सेकंड ऑप्शन नंबर बी मॉडर्ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे which of the following factors is the most important factors for the loss of biodiversity? Genetic assimilation, control of predators, destruction of natural habitat, and pest control. So that is the option number C, destruction of a natural habitat. So then next question friends. The xylem is a plant is responsible for transporting the water करता है, amino acid करता है, oxygen करता है. तो आराम से हम चेक करते हैं.
ऑप्शन बी वाटर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ जो फर्स्ट है एनर्जी दैट आर नॉन रेन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस फ्रॉम हीट। ऑप्शन बी रिन्यूएबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे biological oxygen demands is a standard criteria for poultry ratio in aquatic ecosystem, assessing O2 levels in high altitude region, measuring O2 level in broad, computing O2 levels in forest ecosystem. Priority option by consumer assess करता है aquatic ecosystem को biological oxygen demand. The question 102 patents. The aquatic plants commonly used as the bio fertilizers in water yogurt rice feed, lemon, isola, ulpia, tetrapa. So let's get option B. The question 105 patents. Which of the following is known as knocking gas? ammonia, nitrous oxide, ammonium oxide, या chlorofluorocarbon. So let us get option B, nitrous oxide. The next question 106 पे. The fluids are important source of iodine, bromine, chlorine, argon. So let us get option number A, iodine. The question 170, which of the following is a insectivorous plant? Nitrites, Lelumo, Nicotinica, and Nepenthes. So let us get option D, Nepenthes. So the question 108 पे. Human heart is made of how many chambers? Human heart repeats कितने chamber होता है पूछा आपने? Only four, only one, only three, only two. So let us option A, only four chamber होता है इसमें. Question 109 पे. What is the rank of India's World Greenhouse Gas Emission Program to be subject? 9, 10, 11, या 12. That means 10 था. The next question number 110 पे. Geographical units that collect करते हैं, store and release करते हैं water is called, जो क्या कहते हैं, watershed कहते हैं, borderland कहते हैं, wetland कहते हैं इसको, या water reserve कहते हैं. So United States watershed है, option by side है. The question number 111 पे. When did the Water Prevention and Control Protection Act was enacted किया था? The following years 1974, 1975, 1976 and 1977. So that is the 1974 question. So the question number 112 पे. Example of floating ecosystem is a pond है, river है या marshy area है. So that is the river से. So we see जानेंगे. चलते question 113 पे. National First National Center for Marine Biodiversity of India is situated कहाँ पे है? मुंबई है, जामनगर है, भावनगर है, या पुडुचेरी में. So that is the जामनगर. Option B is right answer. The question number 114 पे. Which among the following is a constitution of a natural state? Phosphorus, nitrogen, nitrogen, या potassium. So that is the option B, nitrogen. So the question 115 पे friends. The desert dwelling animals called क्या कहते हैं उसको? Arboreal animals कहा जाता है उसको. Terrestrial animal कहा जाता है. Fossorial animal कहा जाता है या Xerocolonial animal कहा जाता है उसको. So that is the friends. Xerocolonial animals option D side answer. So the question number 116 पे. Which list 1 and list 2 and select the correct answer given code given below. These देखिए या फैक्टर्स देखिए. Peptic ulcers, dengue, elephant foot and malaria. Virus photogia worm and bacteria. Peptic ulcer जो होता है फ्रेंड्स या बैक्टीरिया के लिए होता है. तो वर्म तो फोर है. तो आप इसको रीड कर लीजिए. सीडी को डेंगू जो है फ्रेंड्स जैसा वो पता होगा वो वायरस होता है. अभी का ये आंसर आ गया. इसमें 20 है. जैसा कि एलिफेंट फूड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फ्रेंड्स. वर्म के लिए होता है. उसके बाद मलेरिया है फ्रेंड्स.
इसमें देख सकते हैं। The next question 170. Trophic levels are formed by organism linked in food chain, plants only, animals only, a carnivorous animal only. So that is why also by organism linked in food chain. The question 118 पे तो national park genetic diversity is maintained by कौन करता है इसको? In situ conservation है या ex situ conservation है या gene pool है या non है? So that is why also by in situ conservation है. तो the question number 119 पे हमू डियर है जो हम होता है which of the part of India कहाँ पे पाया तो केरला, असम, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर. So it is the option D, जम्मू एंड कश्मीर पाया जाता है. The next question पे which of the following is not a biodegradable polluter? Mixing waste, urine, excavator या pesticides. तो that is the option D, pesticide है. तो the question number 121 पे which of the following is not true? आपको not true बोला फिर अपने लिए. About the total outlay in the Union by 2023-24 बिल्कुल interest payment 20%, state sales tax and duties 18%, defense 8%, and subsidies to 9%. So that is the option D. Wrong है. So the question number 122 पे मैं please form list में दिया है select the correct answer using for given below. Okay friends, list one क्या दिया है? There is a population and list में दिया है proponent of theory. Optimum population theory, social maladjust theory, demographic financial theory, ये population force supply relation theory. लेकिन लिस्ट में दिया है population theory जैसे Thomson, Malthus, Edwin, Hammond and Harry George. तो आपको फिर अभी मैच करना फ्रेंड्स. जैसे कि मैंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है ये देते हैं एडविन कैनन वन का 3 फ्रेंड्स कंप्लीट कर दो. सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी ये हेनरी जॉर्ज दे दी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थॉमसन देते. पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी जो इन मार्कर्स देती है. जैसे क्वेश्चन 123 पे what do we call balancing the needs of a use resources and also conserve them for future resource conservation, sustainable development, future resources and reducing pollution. So that is the first question will be sustainable development. So the question 124 पे which of the following is not a sustainable development goals targeted to achieve by 2030? Gender equality, zero hunger, food health and well-being, and space research. So that is the option D, space research. So the question 125 पे given below are the two streams there. One is suggestion the region है. जैसे क्या बोला कि population control is necessary to maintain करेगा environment of the country. रिजल्ट क्या बोला है due to the rapid increase in the population the environment balance is maintained. तीन पॉइंट से यूजन को गिवन below ऑप्शन लीजिए. both A and R true and R is correct expression A है. B क्या बोल रहा है A and R is true but R is not correct expression B. A is true and R is false. उसके बाद देखिए A is false and R is true. So that is the option C, A is true है and R is false. तो क्वेश्चन 126 पे what is the theme of the International Day for the Eradication of Poverty 2022-2024? It's 2023. Acting together to empower the children, their families and communities to end poverty. Dignity for all in practice is designating the global action for a world without poverty, coming together to end poverty and discrimination. So that is the option number B, dignity for all in practice. So the question number 127 पे
Role of a human resource in economic development, which is the following statement is required. Effect of economic development on population growth. Effect on population growth in economic development. Here the correct answer using the code given below. 1 both 1 to natural 1 to. Let us say option C, both 1 to is correct. So the question 128 पे. When the census was done for first time in India in year 1815, in year 1861 में, in year 1871 में, in year 1881 में. It's right depends option C 1871 बात करें. So the question 129 पे. लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स. नेक्स्ट करना है. सोशल डेवलपमेंट को दिया है फ्रेंड्स. रिलेटेड विद एसडी 10, 13, 14 and 15. रिलेटेड किससे दिया है? क्लाइमेट एक्शन, लाइफ एंड ऑन लैंड, रिड्यूस इनइक्वालिटी, लाइफ बिलो वाटर. तो एसडीजी को आपको इसमें से ऐड करना था फ्रेंड्स. तो जो फ्रेंड्स आपका एसडीजी 10 ये आपका आएगा रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ये का 3. उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एसडीजी 13 जो है ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, बी का 1. एसडीजी 14 जो है फ्रेंड्स ये लाइफ बिलो वाटर है. एसडीजी फ्रेंड्स 15 जो है ये आपको लाइफ ऑन लैंड है. ऑप्शन डी से आंसर है. तो फिर क्वेश्चन नंबर 130 पे. Who authored the book The Challenges of World Poverty? David Smith, Jennifer Neutral, Amartya Sen, Jim Dredge. The status is option D, Gunnar Midral. Then the question 131 पे. Which one of the following is the main ability of a generally सुरक्षा योजना? Reduce करके मिट्रल मोबिलिटी के मिट्रल मोबिलिटी रेट जो होता है उसको कम करेगा only. Reduction in new national mortality rate only. Reduction in the infant mortality rate only. Reduction in maternal and new original mortality rate. So that is why option number D है. Reduce maternal and new natal mortality rate. तो ये क्वेश्चन नंबर 132 पे. एजेंडा 21 ऑफ ए रियल समिट जो हुआ था 1992 में रिलेटेड किससे था? सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, वोल्टर्स प्रिंसिपल से था, क्या एनवाटर एजुकेशन से था, ये पोजीशन ऑफ ऑयल से था. तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 सोशल डेवलपमेंट से था. तो क्वेश्चन 133 पे. Consider the following statement about the social development based on global indicators framework and data produced by the research statistical system and information collected at regional level. International security is now present in annual sustainable development goals report. Sustainable development report is produced to inform करेगा ये coordinated sustainable development goals review deliberation at the UN General Assembly once every quarters. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both one and two, neither one, not two. So let's say option भाई only one है. तो फिर क्वेश्चन 134 पे. With reference to Women Development Report 2022, which of the following statement is correct? India's rank on Women Development Index has upgraded from 130 to 122 to 123, 132 in 2020. India's rank on Women Development Index has dipped 130 to 122 से 2020 से to 132 in 2022. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both one, only two. So let us press option number B, only है. Okay, question 135 पे. Natural resources should be used by present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would be किया जाएगा? Green development कहेंगे, social development कहेंगे, social development कहेंगे, या organic development. So that is option C, development है वो.
चलिए क्वेश्चन 136 पे with respect to PM गति शक्ति स्कीम मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट से करेक्ट PM गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान लॉन्च किया था प्रोग्राम PM गति शक्ति स्कीम pertain to 7 engines road railway airport ports must transport waterway Russian infrastructure and I think we align with PM गति शक्ति framework. Here the correct answer from code given below. One only two only both one and two neither one or two. So that is the option number B only है. So the question number 137 पे which of the following is not an economic utility? Service, service, voluntary service, the transportation, just voluntary service economic utility में आएगा friends. So the question 138 पे with reference to the scheme voice education in children 2023 budget income. Here the question correct. Compared to the previous year, the highest question decline in recorded in the education of Manrega. Compared to the previous year, the highest percentage of vote has been recorded in the education of the Jal Jeevan Mission. Even the correct answer is using the code given below. Only one, only two, both one and two, neither one or two. So that is the option number A, only one है. So चलते question number 139 पे. By which year the target of population stability has been fixed in India? Year 2045, 2070, 2075. Yeah, 2018. So that is the option number B by 2070. So the question 140 पे. Which statements is a proof for finance sectors? Fiscal management in Indian budget 2023. 20 years interest-free loans to state. Fiscal deficit to 3.5% of GSDP allowed for state. Fiscal deficit 2025-26. The target is to be below 5.5%. Budget estimated 2023-24 for the total expenditure is 55 lakhs crore. So that is option number B. Fiscal deficit जो है 3.5% of GSDP allow करता है for state के लिए. So the question number 141 पे. According to the economic survey 2023 about the service, which of the following statements is not correct? Credit growth to service is above 16% since July 2022. 75% of digital banking units announced for the transforming financial services. Fashion, grocery, and general merchandise will be captured nearly two-thirds of the Indian e-commerce market by 2030. PMI services witness with the strongest expansion since July 2022. So that is the option number C. The fashion, grocery, and general merchandise will capture nearly two-thirds of the Indian e-commerce market by 2030. So the question 142 के which of the following is a type of a poverty? Poverty, relative poverty, relative poverty, and personal poverty. One and two only. If the correct answer is using for 1, 6, 1, 2, and 3, 3 and 4, 1 and 4. So that is friends. Relative poverty है, relative poverty, functional poverty, तो इसका option number B is correct. चलते question number 143 पे. Which of the following scheme or years is not correct में? तो कौन सा correct match दिया आपको बताना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, rural housing interest subsidy scheme 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी urban mission 2015, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014. रिपीट दे रहा हूँ फ्रेंड्स. श्यामा प्रसाद मुखर्जी urban mission जो है 2015 में था फ्रेंड्स, 2016 था. Question number 44 पे. Which of the following scheme is related to Uttar Pradesh? अनूठी उपहार स्कीम, मात्रा शक्ति उद्यम मित्र स्कीम, इसलिए मातृत्व स्कीम एंड स्त्री निधि स्कीम. अब बताना फ्रेंड्स. थर्ड कौन सा यूनिक कोड गिवन मिलो 1 only 2 only, both 1 and 2, sorry both 2 and 3 and 2 3 and 4. तो साइड से में ऑप्शन भाई only 1 है. 1 और 3
उपहार स्कीम। चलिए क्वेश्चन 145 पे, which of the following scheme program is not a central government program? It is a उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। इट इज नॉट ए, मतलब ये बता रहा है फ्रेंड्स, आपको पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का। बनरेगा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेसवे, पीटी नेहरू उत्कर्ष मिशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, who was written the book of from dependence to self-reliance? Why? Venugopal Reddy, C. Rangarajan, D. Vikhem, Raghuram Rajan जी, या बिमल जलान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिमल जलान जी। चलिए क्वेश्चन 147 पे, which of the following is known as World Wetland Day? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 1 फरवरी, या 2 फरवरी। So राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 फरवरी। चलिए क्वेश्चन 148 पे, World Social Protection Reports is published by World Bank, World Health Organization, International Labour Organization, World Economic Forum। So राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। तो the question 149 पे, friends, in which year the mid day meal scheme was renamed किया गया था पीएम पोषण स्कीम के नाम से? 2018, 2019, 2020, 2021। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2021। इसके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स 150 पे, which of the following Indian budget department 2023-24 allocation amount approx कोल्ड मैच बता मिनिस्टर हेल्थ को दिया गया है 89,155 करोड़। क्या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 80,000 करोड़ दिया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए क्या 9,150 करोड़ दिया गया था? या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 12 करोड़ दिया गया? तो राइट आंसर फ्रेंड्स नंबर ए, मिनिस्टर फॉर हेल्थ को लिए फ्रेंड्स 89,155 करोड़ दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स यूपीपी यूपीपीसीएस 2023 का जेड जनरल स्टडी पेपर 1 था ये बिजनेस मैनेजमेंट। आप इसको फिर बार-बार इसको रिवाइज कीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का एनालाइज कीजिएगा फ्रेंड्स। हमका ये आपको मिलेगा फ्रेंड्स कि किस टाइप के ट्रेंड जब क्वेश्चन पूछता है हमने फिर ये इम्पोर्टेंट। अभी फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो फ्रेंड्स बिल्कुल होगा कि कुछ भी फ्रेंड्स आपको क्वेरी है तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक फ्रेंड्स रिवाइज करिए फ्रेंड्स, बार-बार पढ़िए फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।